एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ गामा फंक्शन, जो उसका फॉर्मूला था, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज, हाउ वी कैन फाइंड द गामा फंक्शन और गामा ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड ऑल, और हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी सम मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गामा फंक्शन. सो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं. एक क्वेश्चन जो होगा हमारे पास है, सपोज इवेल्युएट इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to infinity y raised to 4 into e raised to minus y raised to 6 dy. ओके, ये क्वेश्चन है. सो अब देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास e raised to minus y raised to 6 है. ठीक है, यहाँ पर जो y raised to 6 है उसी क्या होना चाहिए था, माइनस एक्स और माइनस वाई और लीनियर फंक्शन. ओके, तो हम इसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. तो सॉल्यूशन पुट y raised to 6 is equal to t. So y is equal to t raised to 1 by 6. ये हो गया. अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, इट मींस लिमिट्स विल चेंज. ओके, सो देखते हैं. सो इफ y is equal to 0, तो फिर क्या मिलेगा, t equal to 0 and y is equal to, अगर infinity है तो t is equal to infinity, means limits remains same. Okay, now so dy is equal to 1 by 6 t raised to 1 by 6 minus 1, which is equal to minus 5 by 6 dt. Okay, so यहाँ पर हमारे पास 1 by 6 t raised to minus 5 by t dt मिल गया. अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास होगा, सो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to infinity y raised to 4. वी हैव द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो y की जगह पुट करेंगे t raised to 1 by 6 raised to 4 into e raised to minus y raised to 6 is यहाँ पर t हो गया. Now dy is 1 by 6 t raised to minus 5 by 6 dt. ओके, अब क्या करेंगे, जस्ट इसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रल 0 to infinity t raised to 4 by 6, that is 2 by 3, so 2 by 3 into e raised to minus t into 1 by 6 t raised to minus 5 by 6 dt. ओके, सो फॉर मोर सिंप्लिसिटी जो 1 by 6 हम इसे इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे. इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी हम पहले लेते हैं. अब देखो, ये t रेज टू 3 by 2 और ये t रेज टू माइनस 5 by 6, बेसिस सेम, सो पावर विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. सो वी कैन राइट t रेज टू 2 by 3 माइनस 5 by 6. ओके, और अगर इसे हम 4 by 6 रखते ज्यादा अच्छा होता. चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज 1 by 6 इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus t raised to, ये 2 by 3 को हम 4 by 6 अज्यूम करते हैं. सो दिस विल बी t raised to minus 1 by 6 dt. ओके, सो ये हो गया हमारा फंक्शन. देखो, e raised to infinity, e raised to minus t raised to n के फॉर्म में. सो विच इज इक्वल टू 1 by 6 gamma of n plus 1. So which is equal to 1 by 6 गामा ऑफ 5 by 6. और जो ये गामा के अंदर जो वैल्यू है 5 by 6, इट इज लेस देन 1. तो यहाँ पर हमारा फंक्शन की वैल्यू हो गया 1 by 6 इंटू गामा ऑफ 5 by 3. ये हमारा आंसर हो गया. ओके, क्लियर. नाउ अगर कुछ डाउट होगा तो इसे वापस गो थ्रू करो और ट्राई करो. सो लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं लॉग के बेस पे. सो प्रॉब्लम हम लेते हैं, प्रॉब्लम evaluate integral 0 to 1 x into log of x raised to 4 dx. So this is the question. Okay,
ना अब देखो इसमें लॉग आ गया, लॉग एक्स, सो लॉग एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस टी से। ओके, सॉल्यूशन, सो पुट log x is equal to minus t. Okay, then therefore x is equal to e raised to minus t. क्लियर। अच्छा, अब जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, log x को हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस टी से, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स है वो कैसे चेंज होगा। सो इफ here we have lower limit 0 and upper limit 1, so if x is equal to 0, if x is equal to 0, then log 0 is not defined or infinity, so then t will be infinity. Okay, now when x is equal to 1, so log 1 is equal to 0, so therefore t is equal to 0. So remember कि जो लिमिट है वो चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, सो dx is equal to e raised to minus t into dt, और t का डेरिवेटिव माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस 1। ओके, सो विल गेट dx is equal to here e raised to minus t dt. ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब लिमिट जाएगा हमारा 0 से इंफिनिटी। ओके, sorry, lower limit is infinity, so infinity, upper limit is 0. Okay, 0. Now x की वैल्यू हमारे पास क्या है, e raised to minus t, so e raised to minus t into log x की वैल्यू हमारे पास minus t raised to 4 into dx is minus e raised to minus t into dt, ये आ गया ना। ये माइनस साइन हम बाहर लेंगे, सो माइनस इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 0 e रेज टू माइनस 4t, ओके, इनटू t रेज टू 4 इनटू e रेज टू माइनस t dt. ओके, नाउ लेट्स सी, अब क्या करते हैं हम, इसकी जो लिमिट है इंटीग्रल की वो इंटरचेंज कर देंगे। ओके, सो जो माइनस साइन है इट बिकम्स प्लस, सो 0 टू इंफिनिटी e raised to minus 5t into t raised to 4 dt. So now see here e raised to minus 5t है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं होना चाहिए, हमारे पास some linear value or cos simple x होना चाहिए. So we'll put here again. So again put यहाँ पर 5t की वैल्यू को कुछ अलग ही फंक्शन ले लेते हैं, x ले लो, y ले लो, x तो नहीं ले सकते, y ले लेते हैं। Okay, so put 5t as y, so t is equal to y upon 5. Okay, so now dt is equal to dy upon 5, ये हो गया। now लिमिट चेक करेंगे, so if here we'll put t is equal to 0, then y will be 0. If t is equal to infinity, y will be infinity, means limits remains same. So integral 0 to infinity, okay, so e raised to minus 5t is y into t raised to 4, so t is y upon 5 raised to 4 into dt is dy by 5. ओके, सबकी वैल्यू हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ यहाँ पर हो गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस y, ये y रेज टू 4 लिखते हैं, और नीचे 5 रेज टू 4 इनटू dy अपॉन 5। सो जो डिनोमिनेटर में है 5 रेज टू 4 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में तो 5 रेज टू 5, और ये कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन 5 रेज टू 5, ओके, इनटू integral 0 to infinity e raised to minus y into y raised to 4 dy. तो अब हो गया ये हमारे पास गामा फंक्शन की फॉर्म में e raised to minus x raised to n dx के फॉर्म में। ओके, सो हियर वी कैन राइट 1 upon 5 raised to 5 into gamma of n plus 1, that is 5, and since it is a integer, okay, positive integer, so it is 4 factorial upon 5 raised to 5. So this is our answer. Okay, clear? Now, so we can solve one more problem based on the same logarithmic function.
Okay, so problem, evaluate integral going from 0 to 1 dx upon under root of x into log of 1 by x. Okay, so this is the question. Now see, in this question जो हमारे पास log function है वो log of 1 upon x, means here we will substitute log 1 upon x as t. Okay, so solution, put log of 1 upon x is equal to t. Okay, so here we'll get 1 upon x is equal to e raised to t, here e raised to t, so therefore x is equal to e raised to minus t. Okay, now we'll change limit. So if x is equal to 0, 1 upon 0 is infinity, and log infinity here we have what? Infinity. Okay, now if x is equal to 1, so log of 1 is 0, so therefore t is equal to 0. Now dx is equal to minus e raised to minus t dt. Okay, so therefore integral जो हमारा बनेगा वो होगा इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास e रेज टू माइनस t into log of 1 upon x is t into dx is minus e raised to minus t dt. Okay, now we'll solve it. So ये माइनस साइन बाहर लेते हैं, infinity to 0, we can write here e raised to minus t और रूट के अंदर, so root it means what? 1 by 2 power, so we can write here e raised to, wait, here we have x and x is equal to e raised to minus t. Okay, so we can write here t by 2 into t raised to minus 1 by 2 into e raised to minus t dt. Okay, so again we'll change the limit here, infinity to 0 को हम करेंगे 0 to infinity. अब ये हो जाएगा e raised to minus t by 2 into ये, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा t by 2 minus t into t raised to minus 1 by 2 dt. So here integral 0 to infinity e raised to 1 by 2 minus t by 2 t, so this is minus t by 2. Okay, into t raised to minus 1 by 2. So now if you see here we'll get t raised to minus 1 by 2 हमें यहाँ मिला है. Okay, जब इसे यहाँ पर minus 1 by 2, but we want e raised to minus t types, so again put t by 2 is equal to some another value y. Okay, so t is equal to 2y. Now limit will change. If t is equal to 0, y will be 0. If t will be infinity, y will be infinity. Okay, now so dt is equal to 2 dy. Now let's put the value. So integral 0 to infinity e raised to minus t by 2 is y into t की वैल्यू हमारे पास 2y raised to minus 1 by 2 dy. Okay, किसकी वैल्यू हमने dt की वैल्यू पुट किया, just a second, e raised 1 by 2, so e raised to minus y into t की जगह पे 2y raised to minus 1 by 2 into dt, t is equal to 2 dy. Okay, so integral 0 to infinity e raised to minus y into 2 raised to 1 by 2, 2 raised to 1 by 2 is square root of 2 और ये नेगेटिव है, so 1 upon square root of 2 और ये 2 यहाँ पर y raised to minus 1 by 2 dy. Okay, so for more simplicity
ये हो जाएगा हमारे पास √2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस वाई इंटू वाई रेज टू माइनस 1/2 dy। तो अब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में, गैमा फंक्शन के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, देन gamma of n plus 1 which is equal to square root of 2 into gamma of 1/2 which is equal to square root of 2 pi। एक साथ लिख देते हैं, ओके। सो दिस इज द आंसर। सो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करो। सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दीज आर द मोस्ट, और पैटर्न सेम है, जस्ट फॉलो द पैटर्न, ओके। गुड लक।